welcome back. So today we are going to see one of the important topics of your atomic structure. We are going to see the experiment which was conducted by J J Thomson, which led to the discovery of electrons and which also made the Dalton's atomic theory, one of the postulate of Dalton's atomic theory, to be discarded. Let us see. What experiment am I talking about, sir? The cathode ray tube experiment. Okay, so let us see what exactly is the cathode ray tube experiment, right? So let me give it up like this: the cathode ray tube experiment by J J Thomson. So what happened is, J J Thomson tried taking a glass tube. Inside this glass tube, he tried, in order to fix two metallic plates, and these two metallic plates were connected to a external voltage source. This voltage source was a variable voltage source. I'll talk about that, but before that, so this voltage source was an external voltage source, variable voltage source. Okay, now what do we mean by variable voltage source? Variable voltage source is that where we can change our voltage, just like a rheostat for resistance, where we can keep on increasing or decreasing the resistance. In the same way, here we can increase or decrease the voltage. I'll put an arrow over here to show variable voltage source over here. But before that, we all know that whenever there is movement of electron, the electron will always move from the higher potential to the lower potential, from negatives higher potential to the negatives lower potential. Now think about this, sir. The plates which I have taken here, before I connect the voltage source, okay, say I am having a key open over here like this, what will happen is, both the plates which I have taken here, initially they will be neutral. Neutral means what, sir? यहाँ पे जितने भी electrons होंगे उसको exactly balance करने के लिए उतने ही number of यहाँ पे positive charges भी होंगे, that is protons. Even in this case the same thing will happen. Whatever number of negative charges will be there, exactly that many amount of positive charges will also be present, so that the overall charge on these plates are neutral, because they are now not connected with any voltage source. Okay, say I am connecting with a battery external voltage whose positive terminal is at +6. That means it is having extra positive charge over here, means it is lacking electrons, and the negative is at -6. That means it is having extra electrons. Okay, now what will happen? Let us see what will happen. Okay, see, before I say what is going to happen, this cathode ray tube is connected to a vacuum pump and we will try to pull out as much air as we can. Okay, that is the first thing which we are doing. Now what will we see is, we will try to connect the key. That means we will try to switch on the key. Now what will happen? We know that whenever you connect a system like this, it will try to come to a equal potential. That means this and this, they will try to come to a equal potential. Till that time, what will happen? The charge flow will take place. Even in this case, both of them will try to come to equal potential. Till that time, there will be charge flow. तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या है सर? 0। इसके ऊपर भी चार्ज 0 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को देखते हैं। वी नो दैट इन एन एटम only electrons are mobile, only electrons can move. Positive charges are fixed, they are inside the nucleus and they cannot move, right? So now you see what will happen is,
negative from here, as the positive cannot move, in order to balance this, in order to come into the same potential, an electron from here will start its journey. It will start moving towards the positively charged plate here. When one electron from here is going away, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चार्ज बच जा रहा है सर? बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा चार्ज क्या बच जा रहा है? +1. दैट इज वाई नाउ दिस पर्टिकुलर प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, +1 चार्ज, एंड दिस प्लेट ओवर हियर +6 था, एक इलेक्ट्रॉन आके इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका +6 - 1 +5. इसका चार्ज क्या हो जाएगा? +5. अब क्या होगा सर? सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा. अब दो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? +2. क्या हो जाएगा सर? ये +2. और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आके यहां पे ऑक्युपाई करता है, तो यहां पे दो पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल हो रहे हैं, सो दैट इज वाई दिस विल बिकम +4. नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द प्लेट. When the electron comes and occupies a spot over here, what is happening sir? They are getting cancelled, the positive is getting cancelled. Now the charge will become +3. Now the charge is going to become +3, and one electron is getting removed from here, means even here the charge will become +3. So +3 +3. Now both of them are at equal potential. आ रहा है समझ में? तो हम लोगों को बोला जाता है that whenever a positive charge plate of a battery is connected to this, it will become positively charged. So today we tried to see how it is becoming positive charge and why it is becoming positive in order to come into equal potential. यहाँ पे और कोई choice नहीं है जिससे ये equal potential में आ जाए. इन द सेम वे यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे देखिए एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज़्यादा पोटेंशियल में, नेगेटिव पोटेंशियल में ये ज़्यादा है. सो नाउ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द प्लेट. चलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी इधर दिखा देते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाता है, तो इसका चार्ज कितना हो जाता है सर? -1. और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5, तो -5 चार्ज. नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि अभी बैलेंस्ड नहीं है, अभी भी इसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो अभी क्या हो जाएगा? एक और इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगता है तो इसके ऊपर चार्ज हो जाता है -4, इसके ऊपर चार्ज हो जाता है -2. एक और इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके ऊपर चार्ज हो जाता है -3, और इसके ऊपर भी चार्ज हो जाता है -3. इसके बाद भी क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा? देन द आंसर इज नो सर, बिकॉज दे हैव कम टू द सेम पोटेंशियल, राइट? सो इन दिस वे व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू न्यूट्रल प्लेट्स टू अ कैथोड रे tube, that means if you are connecting to neutral plates, when you are connecting to neutral plates to a external voltage, what is happening is one of the plate is becoming positively charged, which is connected with positive terminal. One of the plate is becoming negative charged, which is connected to the negative terminal. Easy sir. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सर, जब मैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ, मीन्स न्यूट्रल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है, जिसके वजह से ये खुद भी पॉजिटिव हो जाता है. एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है. यहाँ पे बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लेट के ऊपर और उसको बना देते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड. आई होप आप लोगों को समझ में आया. चलिए, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया दैट वन ऑफ द प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? तो चलिए हम लोग एक और डायग्राम बना देते हैं इसको देखने के लिए अच्छे से, है ना? देखिए, सो आई एम सिंपली रिमूविंग इट. ओके, वेट अ मोमेंट. We are going to draw this diagram once again in order to explain, sir, once if the charges have come, now what next? Okay, so you see, we know one thing sir. What is that? Opposite charges attract each other. What do we know? Opposite charges attract each other. So when two plates separated by some distance are oppositely charged, तो क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो 100% होगा. चलिए देखते हैं. से दिस इज माय कैथोड रे ट्यूब.
now we have understood that this become positively charged and this has become negatively charged, and this is connected to a external voltage source where this is connected to the positive of the battery and this is connected to the negative. Okay, I told you that I'll be taking a variable voltage source. मैं बताऊंगा इसका यूज कहां पे है. Okay, चलिए. Now this is positively charged and this is negatively charged. Obviously इन दोनों के बीच में attraction force होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट मोबाइल. तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का. अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग अच्छे से सोचिए सर. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम के अंदर है, तो इनका न्यूक्लियस इधर पुल कर रहा है इनको, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है यहाँ पे, ये कहाँ पुल कर रहा है सर, दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज पुलिंग आउटसाइड. नाउ व्हाट आई विल डू, अब आप लोगों को ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का मीनिंग समझ में आएगा. व्हेन आई इंक्रीज द वोल्टेज, द चार्ज ऑन द प्लेट्स विल ऑल्सो इंक्रीज. चार्ज इंक्रीज होने से द अट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो इंक्रीज. At a particular voltage, ये फोर्स by the positively charged plate, ये फोर्स जो है इतना स्ट्रांग हो जाता है that the electron will start moving towards the positively charged plate. And when the electrons are moving towards the positively charged plate, we will say that as they are starting from the cathode and as they are moving towards the anode, okay, in an electrolytic cell where we are using external energy in order to make a chemical change, the negatively charged electrode is called as cathode, the positively charged electrode is called as anode. So electrons will start moving from the cathode towards the anode. इसीलिए क्योंकि इनका सोर्स कैथोड है, हम लोग इनका नाम को कैथोड रेस रख दिए. आ रहा है समझ में आप लोगों को सर? तो कौन मूव करना स्टार्ट किया? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट किए. क्यों मूव करना स्टार्ट किए? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसका अट्रैक्शन फोर्स है. सो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. और ये फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गया, पोटेंशियल ज्यादा रखे हम लोग, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन हैज कम आउट. ओके, तो सर अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आए, हम लोग इन्हें कैथोड रेस बोल दिए, तो सर इससे डाल्टन्स का पोस्टुलेट से क्या लेना देना? नाउ डाल्टन हैज टोल्ड दैट, और इन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन वी हैव स्टडीड दैट atoms are indivisible, but through this experiment we just proved that from an atom we can remove electron can be removed from inside an atom. That is why Dalton's postulate, which stated that atoms are indivisible, was discarded. Now let us talk about the few properties of cathode rays. What are these properties, sir? The first thing is the cathode rays are invisible. The cathode rays are invisible rays. They are not visible to the naked eyes. What? Sir, cathode rays are invisible? Then how could J J Thomson see them? What J J Thomson did is, on the anode he placed a photographic plate. एनोड के ऊपर उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस करके इस एनोड के ऊपर छोटे छोटे होल्स कर दिए. तो ये कैथोड्स जो है, तो वैसे में तो वो विजिबल नहीं है, लेकिन ये जब जाते हैं और एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं. व्हाट इज फोटोग्राफिक प्लेट सर? इट इज नथिंग बट a photographic film, generally जो हम लोग कैमरास में यूज करते हैं. whenever light is incident on it, it will get exposed. Okay, so on this photographic plate, when these electrons are going and getting striked, there will be an exposure that gives us a proof, yes, there is something which is traveling from the cathode and it is moving towards the anode. Okay, so the first property is they are invisible. Now the second thing, when we placed an external electric field, देखिए सर, हम लोगों को अब नहीं पता है ये कैथोड रेस जो आ रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है.
तो तब लोगों ने क्या किया, यहां पे वी ट्राइड टू प्लेस अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द path in which your electrons are traveling. We saw one thing. What is that, sir? देखो आइडिया, बेसिक आइडिया सिंपल था. इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी कैथोड रेज हैं, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिव रिपल करेगा, ये तुम्हारा नेगेटिव जो है अट्रैक्ट करेगा, तो किधर जाएगा, ये बेंड होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द बॉटम हियर. और वही अगर हमारे कैथोड रेज पॉजिटिव मींस नेगेटिव होंगे तो नीचे वाला नेगेटिव प्लेट उसको रिपल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ बेंड होंगे. When applied an external electric field, we saw that the cathode rays were moving towards the positively charged plate, जहां से हमें पता चलता है that the cathode rays are negatively charged. दूसरा चीज क्या देखे हम लोग, that the properties of cathode rays were not dependent on the type of material. यहाँ पे कौन सा मेटल लिए हैं, सिल्वर लिए हैं, कॉपर लिए हैं, या फिर हम लोग आयरन लिए हैं, या कौन सा मेटल लिए हैं, उस पे कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं कर रहा था. तो जहां से हमें पता चला दैट द कैथोड रेज आर नथिंग बट द फंडामेंटल यूनिट्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले, है ना, अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, उनका खुद का मतलब एवरी इलेक्ट्रॉन इज इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग, उनका क्लस्टर या उनका कुछ है नहीं यहाँ पे, right? So that was understood. So in this way, after applying even a magnetic field, we saw that these cathode rays were behaving as if they are negatively charged particles. Then later on these cathode rays or the negatively charged particles were named as electrons. Okay? छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मैं एज्यूम करता हूं आप लोगों को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज समझ में आया होगा आप लोगों को, राइट? एंड क्यों कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद डाल्टन्स पोस्टुलेट, एक डाल्टन का पोस्टुलेट को हमें डिस्कार्ड क्यों करना पड़ा? आई एज्यूम आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं इस वीडियो में समझ में आया होगा. Right? So we will meet again in our next video with a new concept related to atomic structure. Till then, keep learning, sir. Thank you. Bye bye.